Assalamu alaikum. In this video I'll discuss proportion, but before going to discuss mathematical definition of proportion, I would like to give you everyday life example so that you can understand the concept of proportion easily. Okay, but as I received so many comments that I should make a video in Urdu language, so okay, it's better that you requested for Urdu, not any other language. So I just really want कि आपको मैथमेटिक्स के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, चाहे वो उर्दू में हो चाहे इंग्लिश में. दिस चैनल इज़ फॉर यू, सो यू आर ऑलवेज़ वेलकम फॉर योर कमेंट्स एंड सजेशंस. तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे और उसके लिए लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल. In the radiology class, there are 20 girls and 60 boys. In the linguistic class, there are 30 girls and 90 boys. Is the ratio of girls to boys same in both classes? So, क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि रेशियो हमने बताना है कि दोनों क्लासेस में गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशियो है दोनों क्लासेस में वो सेम है या नहीं. अब उस रेशियो को बताने के लिए पहले वो रेशियो हमें फाइंड करना होगा दोनों क्लासेस में रेशियो है क्या, गर्ल्स टू बॉयज़. तो गिवन इन्फॉर्मेशन हमें क्या है, एक रेडियोलॉजी क्लास है और एक लिंग्विस्टिक क्लास. सो हम पहले देख लेते हैं कि रेडियोलॉजी क्लास में क्या है रेशियो गर्ल्स टू बॉयज़. अब यहाँ आप देखें, द नंबर ऑफ़ गर्ल्स आर 20, नंबर ऑफ़ बॉयज़ 60. सो इन क्लास रेडियोलॉजी वी नो दैट द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉय, so there, as we have discussed in the first video, that how we can express the ratio in the fraction form, or we have discussed 3 different ways, like in word form, that would be girls to boys, or 20 is to 60. The ratio of girls to boy is 20 is to 60, or you can use that colon to show the ratio 20 colon 60, or you can use fraction 20 upon 60. So all these we have discussed in our very first lecture. So we can write ratio of girls to boys would be equal to 20 ratio 60, और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में भी 20 अपॉन 60. और फर्दर हमने फर्स्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि रेशियो को हाउ वी कैन कन्वर्ट टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये डिस्कस किया था, हमें यहाँ पे एंटीसेडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों को डिवाइड करना होगा बाय इट्स ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, और इन फ्रैक्शन to the numerator and denominator we need to divide with the greatest common factor. So we will end up with the fraction that is the simplest form of the ratio 1 upon 3, and we can rewrite it into this form. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्लास रेडियोलॉजी क्लास के लिए गर्ल्स टू बॉयज़ का रेशियो फाइंड आउट कर लिया, दैट इज़ दिस वन. नाउ वी विल मूव टूवर्ड द लिंग्विस्टिक क्लास, और उसके लिए भी हम इसी तरह सिमिलरली रेशियो फाइंड कर लेंगे. सो देयर आर 30 गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 30 and 90 boys, so boys will be 90, and now we can write the ratio of girls to boys, that would be 30 ratio 90. We can convert it into the fraction form
Then we can further simplify it by dividing the greatest common factor, that would be 30. 30 upon 30, that will give you 1. और 90 को आप डिवाइड करोगे जब 30 से तो आपको 3 मिलेगा. So we will end up with the simplest form of the fraction, 1:3. अब दोनों क्लासेस के लिए, रेडियोलॉजी क्लास और लिंग्विस्टिक क्लास के लिए, हमने गर्ल्स टू बॉयज़ का रेशो फाइंड आउट कर लिया है. और क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि वो रेशो जो गर्ल्स टू बॉयज़ का रेशो है बोथ क्लासेस में वो सेम है या नहीं. तो यहाँ देखिए, रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ इज़ द सेम. दैट वाज एक्चुअली 20:60 और हमने उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, 1/3 आ गया. और इसको भी देख लें, ये भी आपके पास 1/3 है और 1:3 है. What does it mean? That the both 20:60 and 30:90 is equal to 1:3. और जब भी आपके पास 2 equivalent रेशो होंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे तो उसे हम proportion कहेंगे. What we do actually in proportion, we compare the same ratios or equivalent ratios. This means 2 equal ratios form a proportion. फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम 2 ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं इन द सेम यूनिट तो वो आपके पास होता है रेशियो. और प्रोपोर्शन क्या है आपके पास, जब भी आप 2 सेम रेशियोज़ को कंपेयर करते हैं वो आपके पास प्रोपोर्शन होगा. Now how we can write it in mathematical form? We will take the same example and we will write the mathematical form of that one. So 20 girls and 60 boys in the first class, and then the linguistic class 30 girls. Now how we can represent this proportion in mathematical form? Like this. And how we can read it? 20:60 is the same as 30:90. So what we are doing here in proportion, comparing 2 same proportion. और फर्स्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि इक्विवेलेंट रेशियोज़ क्या होते हैं. जब हम सेम रेशियोज़ को, इक्वल रेशियोज़ को कंपेयर करते हैं, जब हमारे पास इक्वल रेशियोज़ होते हैं बट वी कैन एक्सप्रेस देम बाय डिफरेंट क्वांटिटीज़. सो is the same case that is here. Actually we have the same ratios. These are as 20:60 and 30:90, but in the different numbers. इनका relationship same है. Simplest form इनमें क्या आया था, simplest form of the ratio क्या था, 1/3 and 1/3, the same on here. Now in proportion there are 4 terms. First term is 20, second is 60, third 30, and the fourth term is 90. Now we have here specific number of girls and boys like 20, 60, 30, 90 in different classes, but in general we can write it as A ratio B is the same as C ratio D. Here A, B, C, D are different objects. We can have different numbers here. जो आपके पास फर्स्ट ए टर्म है और डी टर्म है, स्टार्टिंग टर्म और एंडिंग टर्म जो है आर कॉल्ड द एक्सट्रीम्स आर आउटर टर्म्स, वाइल बी एंड सी आर कॉल्ड मीन्स आर मिडल टर्म्स. So now how we can check that 2 ratios are in proportion? हम सेम एग्जाम्पल लेंगे और इसको चेक कर लेंगे कि ये दोनों, इसमें जो 2 रेशो दिए हुए हैं, एक क्लास रेडियोलॉजी के लिए रेशो दिया हुआ है गर्ल्स टू बॉयज़ का और एक लिंग्विस्टिक क्लास के लिए गर्ल्स टू बॉयज़ का रेशो दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स एंड बॉयज़.
हम चेक कर लेंगे it forms a proportion or not. So for that we will take the same example so you can understand in a better way. Now we will check that whether it forms a proportion or not, these two ratios. So method 1, here we can find the product of extremes. और लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि एक्सट्रीम नंबर्स कौन से हैं और आउटर नंबर्स, दैट वुड बी अ 20 and 90, that is A and D. We will check the product of them and that would be 20 times 90 equal to 1800. Now we will check the product of means, middle terms, 60 times 30, that will give you 1800. So what does it mean? It means that the product of extremes is equal to product of means, or you can say that the product of outer terms is equal to the product of middle term. So therefore these two ratios are in proportion. Now we have another method to check that either these two ratios form a proportion or not. So for that हमको क्या करना होगा, इसे फ्रैक्शन में लिखना होगा, इस proportion को, इन numbers को, इन दोनों ratios को. So we will write that into the fraction. That would be 20 upon 60, 30 upon 90. Now this is in the form of like A upon B is equal to C upon D. अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 20 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे और 60 को 30 से. So that would be actually 20 times 90 is equal to 30 times 60, and that will give you 1800 on both sides. So it means that the cross multiplication of both the ratios are same. This means these ratios form a proportion. So ये दोनों मेथड थे चेक करने के लिए कि कोई भी गिवन रेशियोज हैं, they are in proportion or not. आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि proportion क्या होता है. Now we will just quickly wrap up the lecture. रेशियो में हम दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं इन द सेम यूनिट, वाइल इन प्रोपोर्शन हम कंपेयर करते हैं टू इक्विवेलेंट रेशियो. जब भी आपको दो इक्विवेलेंट रेशियो गिवन होंगे, और यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि ये आपके पास एक रेशियो है 20/60. एक रेशियो है आपके पास जहाँ पे आपने कंपेयर किया है टू ऑब्जेक्ट्स को, नंबर ऑफ़ गर्ल्स, नंबर ऑफ़ बॉयज़ को इन क्लास ऑफ रेडियोलॉजी. जबकि जो प्रोपोर्शन होता है वहाँ आप टू रेशियोज़ को कंपेयर करते हैं, और वो प्रोपोर्शन फॉर्म करता है या नहीं करता वो रेशियोज़, उसके लिए ये टू मेथड्स हैं. आपने चेक करना होगा उन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स should be equal to product of means, or the cross multiplication should be the same. It means that the ratios form a proportion.